हेलो एंड नमस्कारम टू एवरीवन। तो ये है मेरी फर्स्ट कस्टमाइज टी शर्ट और आज मैं बनाने जा रही हूँ मेरी फर्स्ट कस्टम मेड टी शर्ट फॉर सेव सॉइल। टी शर्ट के डिज़ाइन की बैक स्टोरी ये है कि जब मैं सेव सॉइल कैंपेन के आर्ट चैलेंज का एक ड्राइंग बना रही थी तब मुझे आइडिया आया दैट व्हाई नॉट मेक द सेम आर्ट वर्क ऑन अ टी शर्ट। बट द प्रॉब्लम इज कि मेरे पास एक प्लेन वाइट टी शर्ट नहीं है। बट नो वरीज, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो चुकी है तो मैंने एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से एक सस्ती सी टी शर्ट खरीद ली है। सस्ती इसीलिए क्योंकि अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो हम इसका पोछा भी बना सकते हैं। स्टेप 1 इज प्रिपेयरिंग अ बोर्ड फॉर अ टी शर्ट। तो मैंने इस बोर्ड को टी शर्ट के सपोर्ट के लिए रखा है एंड फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी इसके ऊपर एक स्मूथ पेपर भी लगा दिया है और टी शर्ट को बोर्ड पर क्लिप कर दिया है। सो द प्रिपरेशन इज डन। स्टेप नंबर 2 is drawing the design on t-shirt. So let's start. शुरू करने से पहले सच में टी शर्ट को पोछा ना बनाना पड़े इसीलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है एक कपड़े पर। तो कलर्स को लगाने के बाद इसकी बैक सरफेस को चेक करते हैं। सो ये वाला वाइट नहीं यूज करेंगे क्योंकि फैब्रिक के ऊपर दिखने के बजाय नीचे ज्यादा दिख रहा है। सो फाइनली वी आर रेडी टू मेक द डिजाइन ऑन द टी शर्ट। लेट्स कंटिन्यू द ड्रॉइंग पार्ट। The drawing part is done. Now the third step is painting the t-shirt. टी शर्ट का बैकग्राउंड कलर हो चुका है। अब बारी है सेंटर पार्ट की। सेंटर पार्ट इज डन। अब सेव सॉइल मैसेज को वर्टिकली टी शर्ट के कॉर्नर्स पे ड्रॉ किया है।